ادھر ایف بی آر نے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ شعیب نظامی سے مزید بات کرتے ہیں۔ شعیب، اس سے کتنی آمدن ہوگی؟ جی 5 بڑے شہروں میں جو ہے یہ ٹیکس لگانے کا امکان ہے۔ تقریباً 100 ارب روپے کی آمدنی جو ہے اس سے متوقع ہے۔ 35 لاکھ دکانداروں کے اوپر جو ہے یہ ٹیکس لگایا جائے گا۔ 10% کی جو شرح ہے اس کے ساتھ یہ ایڈوانس انکم ٹیکس ہوگا، اور اس میں اگر وہ فائلر ہوں گے تو یہ اس کو ریفنڈ لے سکیں گے۔ جو نان فائلر ہوں گے ان کا جو یہ ٹیکس جو ہے وہ جمع ہو جائے گا، ضبط ہو جائے گا، یہ واپس نہیں ملے گا۔ تاہم اس اسکیم کو جو ہے وہ حکومت کی منظوری کے بعد لانچ کیا جائے گا۔ ایف بی آر نے یہ اقدام جو ہے یہ آئی ایم ایف کی شرط کے اوپر اٹھایا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو ریٹیل سیکٹر ہے اور جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ پورا ٹیکس جمع نہیں کراتا۔ جی بہت شکریہ شعیب۔ خارج کیا گیا ہے، اور جس آگ کے سمندر سے گزر کر ہمارے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے، وہ بھی ساری قوم نے تماشا دیکھا۔ جس طرح سے پھر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے دورانیے میں جو جبر اور ظلم وہ روا کیا گیا کہ ساری کی ساری جو ہے ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر کو پولیس نے محاصرہ کر لیا تھا اور لٹرلی بلاک کیا ہوا تھا، اور جس کا پی ٹی آئی کا پتہ چلتا تھا کہ یہ امیدوار ہے، اس امیدوار کو بھی اور اس کے پروپوزر سیکنڈر اور اس کے جو ریپرزنٹیٹو تھا اس کو بھی، حتیٰ کہ وکلاء تک کو بھی جو ہے اٹھا لیا جاتا تھا، اور 4-4 5-5 گھنٹے رکھنے کے بعد انہیں مخلصی ملتی تھی، وہ بھی بڑی منت ترلے کے ساتھ۔ پھر جو سپریم کورٹ میں کل ہم نے بیان کیا وہ بھی ساری قوم نے دیکھا کہ کس انداز سے ہم نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ کس طرح سے ایک فریق بنا ہوا ہے، پی ڈی ایم کا حصہ بنا ہوا ہے پریکٹیکلی، اور وہ پی ڈی ایم کا حکومت کا تسلسل ایک تو چیئر ٹیکرز اور یہ کیئر ٹیکرز جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ان کا سہولت کار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بنی ہوئی ہے، جس کی نظر ثانی کی درخواست پر ریکال کیا گیا کل آرڈر۔ اور صرف یہی نہیں، میرے بیٹے کو بھی گرفتار کیا گیا 31 کی، وہ دفتر سے نکلا ہے 31 تاریخ کو بعد دوپہر، اس کو جو ہے وہ الیکشن پٹیشنز جو تھیں، یہ جو ٹرائبیونل کے خلاف جو اپیلیں کرنا تھیں، وہ اس کی تیاری میں مصروف تھا اور اس کو اٹھا لیا گیا، اور 15-20 نامعلوم وکلاء کا نام دے کر تاکہ کسی کو بھی کام نہ کرنے دیا جائے اور کسی کو جو ہے نالش عدالتوں میں رسائی کو بھی بلاک کیا جائے۔ تو یہ تمام تر عوامل کے باوجود بھی یہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ فیس نہیں کر سکتے ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کا، یہ سارے مل کر بھی۔ اپڈیٹ آپ کو کرے، ٹریبونل نے پرویز الہی، مونس الہی سمیت فیملی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر آر او کو نوٹس جاری کر دیا۔ عابد خان آگاہ کیجیے۔ بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹریبونل نے چودھری پرویز الہی، مونس الہی سمیت دیگر کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے ریکارڈ طلب کر لیا اور یہ حکم دیا کہ ریکارڈ سمیت وہ پیش ہو۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے بطور اپیلیٹ ٹریبونل سماعت کی۔ موقف میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا درخواست گزار کی جانب سے کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی NA 6469 اور PP 3234 گجرات سے امیدوار ہیں۔ 10 مرلے کا پلاٹ ظاہر نہ کرنے پر ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ کاغذات نامزدگی سیاسی بنیادوں پر مسترد کی گئی کیونکہ جو BR کے پاس گوشوارے ہیں اس میں تمام تر جائیدادیں اور یہ 10 مرلے کا جو پلاٹ ہے اس کو بھی ظاہر کیا گیا ہے، لہٰذا آرو کا جو فیصلہ ہے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا اسے کالعدم کرا دیا جائے اور کاغذات نامزدگی منظور کر کے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر عدالت نے اب ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ عابد خان۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں گے، پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث ملزم فولاد گڈانی گرفتار کر لیا گیا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی نذیر۔ بالکل دیکھیں، CTD ٹارگٹ کلنگ سیل نے خفیہ اطلاع پر فیض آباد کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے پولیس اہلکار کی شہادت میں ملوث ملزم فولاد گڈانی کو 11 سال کے بعد گرفتار کر لیے۔ اس ملزم اقدام قتل اور دیگر مقدمات میں مطلوب ہے۔ چودھری صفدر جو انچارج CTD ان کا کہنا ہے کہ ملزم سندھ میں 12 مقدمات
इसके खिलाफ दर्ज हैं और ये सखर का रिहायशी है और चंद रोज कबल भी इसने अपने भाभी को गोलियां मारकर जख्मी किया था और बदनाम जमाना सादिक गडानी और शरीफ गडानी का भतीजा। और यही बताया जा रहा है कि फौलाद गडानी ने जाती दुश्मनी पर 2011 में एहलकार अकबर गडानी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था, जिसमें उसका भाई भी इसके हमरा था, जिसे उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था और 25 साल कैद की सजा सुनाई थी। और इस मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए सखर पुलिस के हवाले किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर कुरैशी को मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। भाई एहसन कुरैशी ने बताया पीटीआई उम्मीदवार शब्बीर कुरैशी को मुल्तान बीच के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। मजीद जाने के ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख से। यासिर शेख, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। जी देखिए, खालिद मियां शब्बीर कुरैशी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा भी हैं और साबिक वजीर मुमलिकत हैं, उन्होंने मुजफ्फरगढ़ की NA 179 और NA 180 से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए थे, जिन पर एतराज दायर किया गया था कि उनके दस्तखत मैच नहीं हो रहे। तो आज जो है उनकी पिटीशन थी समाअत के लिए हाई कोर्ट में और उन्होंने उन्हें पेश होकर अपना मौक़िफ़ देना था, लेकिन तारिक कुरैशी जो उनके वकील हैं, उनके चैम्बर के अंदर से जो है उनको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने बाज़ाब्ता इसकी गिरफ्तारी ऑन नहीं की। ताहम मियां एहसन अब्बास कुरैशी जो इसके भाई हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है कि उनके भाई को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो उनको हटाना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफादारी तब्दील कराना चाहते हैं। उनके हौसले जो है बुलंद हैं। अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से उनकी गिरफ्तारी को ऑन नहीं किया गया। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश बेनकाब होने पर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मोदी सरकार ने अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने का एतराफ कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी की मुंतकली और दिफाई माहिदों पर पेशरफ्त सुस्त पड़ गई। कशीदा हालात के बायस बाइडन ने हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया का दावतनामा भी ठुकराया था। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी ने भारत को तशवीशनाक मुल्क में शामिल करने का मुतालबा किया है। जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्ती से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर भर्ती करने पर सवालात उठा दिए। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर भर्ती करने पर सवालात उठाए हैं और अदालत उज़्मा ने इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि क्या वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि वो खुद से पॉलिसी तब्दील करें। इसके साथ साथ ये भी सवाल उठाया गया उनकी जानिब से कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर नौकरी देने की खैराती पॉलिसियां क्यों बनाई जाती हैं। इस तरह की पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हिम्मत पकड़ें और वज़ीर आज़म को लिखें कि ये पॉलिसी गलत है। चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी किया कि तरजीही बुनियाद पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले, क्या बाकी जो बच्चे हैं वो पाकिस्तानी नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि ये पॉलिसी साबका दौरे हुकूमत में बनी। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर कह दें कि साबका हुकूमत आइन से बालातर थी, ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। आइन हर चीज से बालातर है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस मामले पर हुकूमत से हिदायत लेने की इस्तदा पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि हम अटॉर्नी जनरल को तलब करते हैं और अब इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और सिडनी टेस्ट के दूसरे रोज का खेल बारिश के बायस खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 खिलाड़ी आउट पर 116 रन बना सकी। बारिश और खराब रोशनी के बायस दूसरे रोज सिर्फ 46 ओवर्स हुए। मेजबान टीम को पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 197 रन अब दरकार हैं और लिबुशन 23 और स्टीव स्मिथ 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। आमिर जमाल और आगा सलमान ने एक एक विकेट हासिल की है। कौमी टेस्ट टीम ने पहली इनिंग्स में 313 रन स्कोर किए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 55 से मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। एजाजुल हक ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपील दायर की थी। बाबर मलिक, आगाह कीजिए। जी हाँ, इस वक्त NA 55 रावलपिंडी कैंट पर जो मुश्तमिल हल्का है, इसमें एजाजुल हक की जानिब से नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए जिसे RO ने मुस्तरद किया और उन्होंने अपील दायर की थी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के ट्रिब्यूनल में ये अपील समाअत के लिए मंजूर हुई। आज मुख्तसर सी समाअत के ऊपर फैसला जारी किया गया। यूं एजाजुल हक पर एतराज़ात जो RO की जानिब से लगाए गए थे उन्हें मुस्तरद करके इनकी अपीलें समाअत के लिए मंजूर करते हुए इन्हें इलेक्शन यानी कि NA 55 के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। यूं इसी हल्के से ट्रिब्यूनल की जानिब से NA 55 से बाबर जदून जो है उनके नॉमिनेशन पेपर पर भी एतराज़ात RO के मुस्तरद करते हुए इनके भी नॉमिनेशन पेपर के खिलाफ दायर अपील समाअत के लिए मंजूर करके NA 55 ही से इन्हें अहल करार दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया बाबर मलिक।
एबटाबाद के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने PK 45 से मुश्ताक़ीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला कल सुनाया जाएगा। एबटाबाद के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने PK 45 से मुश्ताक़ीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज किया, जो कि कल सुनाया जाएगा। कोई ऐसा प्लेयर आपकी नज़र में जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान का जो है सुपरस्टार बनने के काबिल हो? देखिए, टू अर्ली हो जाएगा कि मैं किसी के बारे में ये कह दूं कि वो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, लेकिन ये एक पोटेंशियल है लड़कों में, उनमें अल्लाह पाक ने सलाहियतें दी हुई है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मैं चाह रहा हूँ और जो मैं मुसलसल This debate won't resolve what the problem before us is. Let us not go into the powers of the election tribunal. Here, the power it's not a question of election tribunal exercising a power or election commission exercising a power. It's the power being exercised by a constitutional court. Now, you premised your argument by saying court of law is not defined anywhere in the Constitution. Can I first of all correct your premise and take you to Article 175 of the Constitution? If you read the Constitution provision, the chapter is titled The Courts. And now please read 175.1 and then 175.2. So I may be subject to correction, but there are courts of law, and the courts, Supreme Court and the High Courts have other powers as well. Please read. My Lord, there shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. By law comes here. Now read subsection 2. No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or or under any law. Now, first of all, then the court has been defined. There are Supreme Court, there's the High Court, and any number of courts that a law may enact. Correct? My Lord. So it is a clear distinction between the Supreme Court, the High Court, because the Supreme Court and the High Court exercise, and I presume this is the distinction, there is appellate power of the Supreme Court and the High Court where it acts like a court of law. My Lord. And then there is an extraordinary constitutional jurisdiction of these courts, My Lord, which it does not in the classical sense act as a court of law, but as a constitutional court. Therefore, they are called constitutional petitions. And we used to earlier write extraordinary constitutional jurisdiction. So it's an extra jurisdiction conferred by the onto the superior courts of Pakistan. And now we come to sub-article 2. No court shall have jurisdiction save is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. Now, Article 199 confers jurisdiction under the Constitution, which is in addition to appellate jurisdiction. Article 184.3, other articles of the Constitutions confer certain jurisdiction onto the Supreme Court. Does Article 62.1f confer any jurisdiction on the Supreme Court? That is the question. Because there it says court of law, not the Supreme Court, not the High Court. My Lord. So surely we cannot interchangeably use these terms. If it had not used the words court of law, which it does, so then it is, otherwise this power should have been mentioned in Article 184.3, or such powers as can be exercised by High Court under Article 199 or whatever it used to say. So we cannot just disregard the two concepts of a constitutional court and a civil court under Section 9. My Lord. You assumed a lot of things. Because when I use the word, it has not been defined. The phrase court of law is not defined. It is. Because I've just read 197. Supreme Court and High Court, that's the word they use. I am just referring to the phrase. Are you saying Supreme Court is one and the same court, but then it's exercising appellate jurisdiction as opposed to extraordinary constitutional jurisdiction? No, my Lord. So technically speaking, they're two separate creatures. My submission is anything arising out of election tribunal is decided by the Supreme Court in its appellate jurisdiction. Correct.
any declaration in election tribunal or by the Supreme Court in appellate jurisdiction is covered under 162(1)(f). Not any power under 199. थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देना. Election tribunal will exercise powers only under the law, which used to be the Representation of People's Act and now is the Election Act of 2017, correct? My lord. Therefore, when the Supreme Court is exercising such powers, it cannot have more powers than the Election Tribunal or the Election Commission of Pakistan. Unless you can show that the Election Commission of Pakistan and an Election Tribunal can also disqualify for life, then that power, of course, will be with the Supreme Court as well. Otherwise, it will be an additional power given to the Supreme Court under 62(1)(f). Mr. Khurram, could I just summarize what you're trying to say? You're saying that the declaration from a court of law under 62(1)(f), court of law is only the court of law under the plenary jurisdiction, plus the election tribunal, and as a consequence, the appellate forum that hears the election tribunal. These are the plenary jurisdiction plus these two which can give such a declaration. There can be no declaration coming from the High Court. In 199. That's what he's saying. That's what I'm saying. What I'm submitting is plenary jurisdiction for 162(1)(f) is only exercised by election tribunal and Supreme Court in its दिखाइए ना, हमें law से दिखाइए ना. अब show us from the law. That's what I'm saying. Show us from the law. Because PLD 2017 read the Election Act. Law. Show us ROPA or Election Act. My lord, ROPA में आपको दिखाता हूँ. Powers दिखा दें election tribunal. My lord, are we going to ROPA first or Election Act first? First, I'm going to the Constitution, and then I'll go to ROPA. Ji. And I'll refer the Election Act sections as well. Article 219 creates the election tribunal. It says duties of commission. The commission shall be charged with the duty of appointing election tribunals. We come to the point. Then Article 22 to 5, election dispute. No election to a house or a provincial assembly shall be called in question except by an election petition presented to said tribunal and in such manner as may be determined by the Act of Parliament. Then Representation of People's Act, Section 52, which says how proceedings are initiated. Representation of People's Act, Section 52. My lords. Constitution, you've relied on 225? I relied on 219 and 225. 219 for the creation, 225 for the dispute resolution exclusive power. And 62 or what? Section 52 of Representation of People's Act. No election shall be called in question except by an election petition made by a candidate for that election, hereafter in this chapter referred to as the petitioner. Then Section 57, appointment of tribunal. Who appoints the tribunal? For the election petition under the Act, the Commissioner shall appoint as many election tribunals as may be necessary. Then aren't you undermining your own proposition when you rely upon Article 225, which is a very strong categorical language? No court. So how is the Supreme Court then can give a declaration under 62(1)(f)? Supreme Court. Read 225 again. It's very categorical. That's why I've submitted. Supreme Court can only give in its appellate jurisdiction, coming from election tribunal. I think there are slightly two different propositions which you're mixing up. One is the competence of category of the court who can declare. First. Second is to what extent. For instance, in a civil suit, a civil court has jurisdiction to decree the plaint, dismiss the plaint, right? Or anything in between, reject the plaint or whatever. But it cannot
tell a plaintiff to go and stand in the corner. My lord. That jurisdiction it doesn't have. My lord. Unless the law confers on it. Yes, you can ask the plaintiff to go stand if you're filing a frivolous suit. My lord. So let's not mix up the two concepts. Where if you read 225, it says no court, then that excludes the Supreme Court as well. Then the Supreme Court's power is only limited to acting as an appellate forum of the Election Commission of Pakistan or the Election Tribunal. Where will it get, where it is assuming additional powers from? Because Section 67 of ROPA gives 67. Appeal lies to the Supreme Court. 67(3). G. Appeal from the decision of the Election Tribunal, it lies to the Supreme Court. Please refer to that provision of the Election Act or ROPA, which says 62(1)(f) can entail a lifetime disqualification. वो कहाँ लिखा है? मैं आगे आ रहा हूँ. मैं अभी नहीं आया. आगे power of tribunal है, which says that. Where is that section? आपके आर्ग्यूमेंट के मुताबिक तो फिर ट्रिब्यूनल ही कर सकता था ना. तो फिर आपके आर्ग्यूमेंट तो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव नहीं है. व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू आर्ग्यू, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया? मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, डिक्लेरेशन दे सकता है ओनली इफ इट हैज अरीजन आउट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल. ठीक है, कैन नॉट गिव डिक्लेरेशन ऑन इट्स ओन. तो ये फिर आप you are not supporting Samula Baloch. Then you are not supporting Samula Baloch. To some extent I am, because in most of the cases disqualification arose out of election tribunal. In some cases they arose out of writ jurisdiction. In some cases they arose out of pre-election dispute. You are only supporting those. I am only supporting those cases where they have gone through the trial. Okay, ठीक है. I got they the point. They have recorded evidence. Got that point. I got the point. ठीक है. तो आप कहते हैं कि प्री-इलेक्शन पोजीशन इज टोटली चेंज, वो नहीं आ सकते. वो नहीं आ सकते because there is no evidence recorded. तो सिर्फ लिमिटेड हो गया ना, सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल से जो अराइज कर रहा है. अब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं. मुझे क्लैरिटी आ गई ना, इसीलिए पूछा था आपसे कि जरा वो आर्ग्यूमेंट कुछ. मैं इसमें सेक्शन 64 में पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल है. इट हैज ऑल द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट. वो ठीक है, आई गॉट इट नाउ. अब आगे मैं सिर्फ ये दिखा दूं ग्राउंड्स फॉर डिक्लेयरिंग इलेक्शन ऑफ रिटर्न्ड कैंडिडेट वॉइड. दैट इज अंडर सेक्शन 68. व्हाट एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल कैन डू. 68 of ROPA. That is section 68. The tribunal shall declare the election of the returned candidate to be void if it is satisfied that the nomination of the returned candidate was invalid, the returned candidate was not on the nomination day qualified for, or disqualified from being elected as a member. Wait a minute. On the date of submission of nomination paper, he was not qualified. Yes. So it means before presenting the papers, there must be some declaration that the person was not qualified. My lord. And in result thereof, his nomination papers should have been rejected straight away. That can only happen. That can happen at the first stage when the nomination papers are submitted. That is that is also my argument. And secondly, after election, post-election, yes, the tribunal can de-seat the candidate on the basis that prior to election you were disqualified. That is my second argument when I'll distinguish between Article 62 and Article 63. My question is whether under 62, whether somebody can be disqualified. Or 62 says if somebody is earlier disqualified, so his paper should be rejected. He has to be earlier qualified on the date of the nomination paper. So 62 does not clearly say that the person who is scrutinizing the documents has the power to disqualify somebody. The date is the nomination date. And we've understood that point. My lord. If I can just re-articulate my colleague's question. This 68, I've just run through it. My lord. It talks about disqualification. My lord. The nomination paper aapne diya. I'm the returning officer or the election commission or the election tribunal. I say you're disqualified for you're 24 years of age, for instance. You can't contest election. You are a bankrupt. You can't contest election. You have not paid your bijli ka bill. You have not contested. You are not a graduate, etc., etc., etc.
this paper gets rejected. Where is the power of the commission or the tribunal to say that you're disqualified for life? The next election comes along, you are disqualified in this election, you again present your paper. I again look at your papers, and again I find, no, you are not qualified for these reasons. How an earlier disqualification, suppose now I'm 25 years of age, suppose I filed 24, naturally I can't contest elections, or I'm a bankrupt now. The question to you is that we have to look at the Constitution in totality as a whole. Does it not appear odd to you that for other crimes as big as perhaps treason in G and others, you can always come back and contest election? It's not a lifetime situation. But for a civil wrong, which could be as small as committing a misdemeanor of misdeclaration or just lying through you've omitted one entry in a return, the punishment in a way is for life. But if I were to go murder somebody, if I would commit treason, if I were to kidnapping, I could come back and contest election. Where from the tribunal gets the powers for life time disqualification? It has declared. No, where from gets the powers to declare him has for declared life? A decree given remains intact for all purposes. This argument basically it lies in Islamic principles. If you look at PPC, out of all those offences, there are very few offences in which mens rea is dishonesty. My submission is, wherever mens rea is dishonesty, we are talking about public office holder. You just very casually referred to Islam. Either back it up, because I completely disagree with you. You have to back it up. If your contention is agreed, there were those who were violently opposed to Islam, and then they became Khalifs, Khulfa'i Rashideen. तो वो आ ही नहीं सकते थे फिर वापस. This just don't throw in Islam just like that. It is contrary to Islamic injunctions. तौबा का प्रिंसिपल है, राय रास्त पे प्रिंसिपल वापस आने का प्रिंसिपल है, मुस्तकीम शारे मुस्तकीम पे वापस आने का प्रिंसिपल है. शुरू में तो 2-4 ही मुसलमान थे. I mean, we are. तो ये आप ऐसे just don't throw in Islam to give it a validity. No, my lord. What I am submitting is, if repentance or tawbah, when we look at repentance और तौबा की तो बात से आगे मैं चला गया हूँ. So that's what I am submitting. These are 3 things kept by God to Himself. Number 1, not at all. Izzat Zillat. Not at all. Let me make my submission. No, submission, you refer to the Holy Quran. You can't just make a submissions contrary to Islamic principles like this. ऐसे नहीं होगा. Could I change the subject a little? Let me just introduce one other aspect. Let's stay on 62(1)(f). If you look at 62, some of the disqualifications or qualifications are mentioned in the Constitution itself, like he has to be a citizen, the age and all. This is specifically provided. 62(1)(f) brings in a disqualification from a declaration from another court under some law, not the Constitution. It is a declaration of disqualification declaration of contrary under some law. And if the law, Parliament goes ahead and fixes that law and says any such declaration of that law has to be for 5 years, that is actually not tampering with the Constitution. It is providing that any declaration in 62(1)(f) is arising out of a law, not of the Constitution. Because court of law ne karni hai na disqualification. That disqualification is arising out of a law, and the Parliament goes ahead and says any disqualification under the law has to be for 5 years. So then, with that 5 years amendment brought in, isn't the period being provided for 62(1)(f)? Because the Constitution itself doesn't give an unlimited period. It is relying on a declaration coming out of a law.
and law has been corrected and given a period. So there's a distinction. Had there been a constitutional provision, disqualification like age being 25, then perhaps, to my mind, legislation could not do it through ordinary legislation. Constitutional amendment was required. But in this case, the declaration emanates from the law itself. So law is being given a certain time frame. Is pe kuch roshni dal? My Lord, it depends on the validity of the law. That's why I tried to argue that under what proceedings we are before my Lordships. I rely on PLD 2012 Supreme Court 923, Baz Muhammad Kakar Federation of Pakistan. It is the case where Contempt of Court Act 2012. आपने सारा आर्गुमेंट सुना हुआ है, proposition बता देना please. My proposition is through ordinary law, Parliament cannot amend the Constitution. No, fair enough. It has not amended the Constitution. That's what I'm trying to tell you. Added in the Constitution, because how do I demonstrate whether the court can amend the Constitution? Court can interpret it. Interpret in a manner to amend the Constitution or to read into the Constitution. No, my Lord. So this is what we are asking from you, whether the interpretation can be done. देखिए इसमें एक बात आप ये आप कह रहे हैं 62(1)(f) में ये बताया गया है कि डिक्लेरेशन होनी चाहिए कोर्ट से, और आपने कहा कि डिक्लेरेशन सिर्फ ट्राइब्यूनल दे सकता है. ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 157 वो ग्राउंड्स बताए गए. ठीक, क्या उन ग्राउंड्स में ये बात है कि ट्राइब्यूनल इस बात पे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है कि आप राइटियस नहीं हो, आप सजेस्ट नहीं हो, आप अमीन नहीं हो, आप सादिक नहीं हो? ऐसी डिक्लेरेशन आएगी तो 162(1)(f)